and you have ये to सब मत करो। answer it. उसमें से मैंने भी आंसर्स ढूंढे, गूगल कर करके ढूंढे आंसर्स, बिकॉज उसमें सिर्फ क्वेश्चन थे तो मुझे आंसर्स चाहिए थे। That's a good one. हाँ, बीटी ब्रिंजल, जूट, शुगरकेन, टी। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। Now I'm going to play a small game with you. शायद से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा गेम। The game is that I'm going to ask you some UPSC preliminary exams questions, and you have ये to सब मत करो। answer it. ये सब आप नवीन से पूछना ना, They are very simple. उसने आईएएस निकाला है, संदीप भैया का तो निकला ही नहीं। Let's try. अगर because बहुत ही easy questions है और ऑप्शंस के साथ है, ऑफ कोर्स प्रीलिमिनरी एग्जाम्स है तो ऑप्शंस के साथ होता है। और ये मेरे एक फिफ्थ ऑप्शन पास का भी होगा ना? हाँ, हर क्वेश्चन में एक फिफ्थ ऑप्शन आपको बता दूंगा फिर। ओके, लेट्स डू इट। राइट, या लेट्स स्टार्ट। First one, which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? Options are right against exploitation, right to freedom, right to constitutional remedies, right to equality. Third वाला भी, fourth वाला भी सुन लो, right to equality. Equality, yeah. उसका सबसेट है वो। राइट टू फ्रीडम का वो सबसेट है, ये मैंने पढ़ा था भाई। फंडामेंटल राइट्स की ये सारे कैटेगरीज थे जो भी अभी मैंने आपको ऑप्शंस में दिए हैं। या फंडामेंटल, करेक्ट, फंडामेंटल राइट्स में ही आता है ये, राइट। या so the second question is, which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution of India during the first half of the 19th century? The options are: first option, Indian handicrafts were ruined. Second option, machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. Railway lines, third option is, railway lines were laid in many parts of the country. Fourth option, heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers. एक और बार चारों ऑप्शन बताओ ना। Okay, so first option is industrial revolution, basically किस वजह से हुआ था, it's the thing. First is Indian handicrafts were ruined. Machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. Railway lines were laid in many parts of the country. Heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers. Heavy duties were imposed. Okay, that's a wrong answer. The right answer. What is the right answer? Trains. Yeah, it's the first one. Indian handicrafts were ruined. Oh, आपने ज्यादा पढ़ाई करी हुई है, पढ़ के आए हो आप ज्यादा। मैंने भी कोई पढ़ाई नहीं की, ये मैंने जाके यूपीएससी गवर्नमेंट के लिटरली क्वेश्चन पेपर्स छान के 5 इजी क्वेश्चंस निकाले हैं। तो और देखो मैं उसमें भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ बराबर। इसमें से आगे उसमें से मैंने भी आंसर्स ढूंढे, गूगल कर करके ढूंढे आंसर्स, बिकॉज उसमें सिर्फ क्वेश्चन थे तो मुझे आंसर्स चाहिए थे। That's a good one. Yeah. Now, next one. This is a definition of something. तो वो read करके आपको बताना है कि वो क्या है. I mean, I'm going to say, and you have to just say what it is exactly. The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following crop it is? बीटी ब्रिंजल, jute, sugarcane, tea. ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। क्या क्या है बताओ, वापस बताओ। Yeah, so options are cotton, jute, sugarcane and tea. Cotton. Yeah, correct. Okay, next one. नहीं, usually cotton and बीटी ब्रिंजल के क्वेश्चंस चलते थे काफी। थोड़ा बहुत अच्छा हो गया ना, एक साल हो भी गया ना पढ़ के।
ये आपको पता था, मुझे तो पता था. Right. Okay. Next question. Siachen Glacier is situated to the options: east of Kaisin, east of Leh, north of Gilgit, and north of Nubra Valley. I guess Nubra Valley, north of Nubra Valley. True. Right. करेक्ट. वो मैं थोड़ा सा मैप सोच रहा था वो ऊपर. हाँ. Yes, it's Nubra. ये नहीं पढ़ा था भाई. Okay, last one. Okay, last one. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? Now, inscription, I'm going to say the inscription. Whosoever praises his religious sector or blames the other sectors out of excessive devotion of his own sector, he rather injures his own sector very severely. Options are Ashoka, Samudragupta, Harshvardhana, Krishnadeva. Pass. गेस मारता हूँ ना, गेस करता हूँ. मैंने दे तो दिया अभी, तो आपको सुनाई दे दिया होगा आंसर. Thank you Murtaza, it was lovely talking to you. And बहुत मजा आया आपसे बात करके, and thank you so much for being with us. Thank you brother, thanks a lot.